My dear students, best wishes. In this lecture, also, we shall continue with idioms and phrases. Our first idiom is by all means. It means in every possible way, ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ I shall help you by all means. Next is by fits and starts. By fits and starts. It means irregularly, intermittently, रुक रुक के, कदे कदे, या मतलब रेगुलरिटी ना होना, अनियमित तौर पे। Those students who work by fits and starts cannot succeed in life. Cannot succeed in life. Next idiom is by and by. By and by means slowly or gradually. ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। You will understand everything by and by. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਜਾਵੋਗੇ। You will understand everything by and by. Next, by hook or crook means by fair means or foul, ਭਾਵ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ। Some students want to pass their examination by hook or crook. ਕਈ ਵਾਰ by hook और by crook ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ by hook और crook ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ। by fair means or foul, ਭਾਵ ਕਿ ਫੇਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ foul means ਹੋਣ। Next, by leaps and bounds at a very fast speed. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। by leaps and bounds. Our country is progressing by leaps and bounds. Our country ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, our college ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, our school ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, our village ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। even our family ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ our family is progressing by leaps and bounds. Next, by the sweat of one's brow. Sweat ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਸੀਨਾ, SWEAT, ਜਾਣੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ। by the sweat of one's brow means by working hard. ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ one's ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ he works by the sweat of his brow, ਜਾਂ he worked by the sweat of his brow। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and got a very good success, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ by the sweat of one's brow ਜਾਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। by dint of means by means of, ਦੇ ਰਾਹੀਂ। he got a very good success, yeah, he got first division by dint of hard work. By dint of hard work. Next is bosom friend, BOSOM. bosom friend means जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त। he is my bosom friend. English ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ a very close friend, a very intimate friend, तो he is my bosom friend, BOSOM. Next है at a stretch. at a stretch ਹੁੰਦਾ continuously, continuously, ਲਗਾਤਾਰ, ਨਿਰੰਤਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ it has been raining at a stretch for 3 hours. it has been raining, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ at a stretch, ਲਗਾਤਾਰ, for 3 hours, 4 hours, 5 hours, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next is
at his wits ends, at his wits end, यानी utterly confused, पूरी तरह confuse हो जाना. He was at his wits end, WIT apostrophe S. He was at his wits end when he heard the news of his failure. ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ, ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਟਰਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ. ਨੈਕਸਟ, ਐਟ ਦਾ 11th hour, HOUR, at the 11th hour means ਐਨ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੇ, ਐਨ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੇ, just in the nick of time, at the last moment, ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, at the last moment, ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੇ. I reached the station in the nick of time and caught the train. Next, the lion's share. The lion's share ਹੁੰਦਾ big share, large share ਜਾਂ largest share. He got the lion's share out of the property of his father. Next, in black and white. In black and white ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ in writing, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਉਂਝ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਈਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਨ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ. ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਹਾਫ. ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਨਸ ਵਾਈਫ. ਵਨਸ ਵਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ. ਤੋ ਹੀ ਲਵਜ਼ ਹਿਜ਼ ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਨੈਕਸਟ, to be a dog in the manger, MANGER, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਬੀ ਏ ਸਪੋਇਲ ਸਪੋਰਟ. ਸਪੋਇਲ ਸਪੋਰਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾਟ ਪਲੇਇੰਗ ਐਂਡ ਨਾਟ ਲੈਟਿੰਗ ਅਦਰਸ ਪਲੇ. ਨਾ ਆਪ ਖੇਡੀਏ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਈਏ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਜਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਲੀ ਹੈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠ ਜੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਆਪ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਪਸ਼ੂ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਬੀ ਏ ਡੋਗ ਇਨ ਦਾ ਮੈਂਜਰ, ਜਾਨੀ ਏ ਸਪੋਇਲ ਸਪੋਰਟ. ਡੋਂਟ ਬੀ ਏ ਡੋਗ ਇਨ ਦਾ ਮੈਂਜਰ. ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲੇ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਪਲੇ, ਜਾਂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰਬ ਅਦਰਸ. ਨੈਕਸਟ, ਟੂ ਬੈਲ ਦਾ ਕੈਟ. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ to do a very difficult task, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. So everybody was talking but nobody was ready to bell the cat. ਜਾਂ it is easy to talk but difficult to bell the cat. Next, to stand on one's own legs. ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ to be self-dependent, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ. So if you want to succeed in life, you should try to stand on your own legs. Our next idiom is to beat about the bush. Means to talk irrelevantly, to talk in a roundabout manner, indirect manner, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ. Don't beat about the bush, come to the point. Don't beat about the bush, ਭਾਵ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉਰਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. Next, to be caught red-handed means to be caught in the act of committing the crime. To be caught in the very act of committing the crime. ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ. The thief was caught red-handed by the police ਜਾਂ by the people. Next, to be at daggers drawn with.
इट मीन्स टू बी डेडली एनीमीज़। बड़े ही गंभीर किस्म के आप कहना दुश्मन होना, जानी दुश्मन होना, वो तो असी उन्होंने स्वोर्न एनीमीज़ भी कह दें, लेकिन ये भी हुंदा टू बी एट डैगर्स ड्रान विद। द टू फ्रेंड्स आर नाउ एट डैगर्स ड्रान विद ईच अदर, भाव कि हुण ओह दुश्मन बने हुए हैं। नैक्सट इज़ टू बैक बाइट ए परसन, टू स्पीक इल ऑफ ए परसन बिहाइंड हिज बैक। पिठ पिछे ओदी बुराई करना। टू बैक बाइट द मीनिंग सौखा है, चुगली करना। इट इज़ ए वेरी बैड हैबिट टू बैक बाइट ए person. It is a very bad habit to backbite a person. Next, to be at home in means to be expert, निपुण होना, अच्छे होना। He is at home in English. ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ to be at sea, SEA। ਸੀ ਦਾ ਉਂਝ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, लेकिन इत्थे दा मीनिंग समुंदर नहीं। टू बी एट सी का मतलब हुंदा टू बी डल। जिवें पहलां टू बी एट होम एक्सपर्ट होना सी ना, टू बी इंटैलीजेंट है, इत्थे दा मीनिंग हुंदा टू बी डल। ही इज़ क्वाइट एट सी इन मैथमैटिक्स। जां दोनों बनाने होण इक्को ही सेंटेंस दे विच आपां इह कह सकदे हां कि ही इज़ एट होम इन इंग्लिश बट एट सी इन मैथमैटिक्स, इन मैथमैटिक्स। नैक्सट, टू बी हैंड एंड ग्लव। ग्लव की होंदा दस्ताना, हथ अते दस्ताने वांग होना। टू बी वेरी इंटीमेट, टू बी वेरी क्लोज, बहुत नेड़े होना एक दूजे दे। तो इहदा आपां सेंटेंस बना लांगे कि बोथ द फ्रेंड्स आर हैंड एंड ग्लव विद ईच अदर, भाव कि वेरी इंटीमेट, वेरी क्लोज विद ईच अदर। नैक्सट, टू बी इन गुड बुक्स। टू बी इन गुड बुक्स तो भाव हुंदा गा टू बी इन गुड ओपीनियन, टू अर्न ए गुड ओपीनियन, टू हैव ए गुड ओपीनियन ऑफ समबॉडी। तो किसी दे मन विच बड़ा चंगा प्रभाव पाउणा, उहनूं आपां कहने आ टू बी इन गुड बुक्स। ही इज़ इन गुड बुक्स ऑफ हिज ऑफिसर एंड ही कैन गेट एनी वर्क डन। ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज ऑफिसर, भाव कि ऑफिसर दियाँ नज़रां विच ओह बड़ा ही अच्छा है जां बड़ा ही चंगा प्रभाव उसने बनाया होया है। नैक्सट, टू ब्रीद वनस लास्ट। ब्रीद, BREATHE, ब्रीद वनस लास्ट मीन्स टू डाई, टू डाई, मर जाना। द ओल्ड मैन ब्रीद his last yesterday, जां द पेशेंट हैज़ ब्रीद his last, जानी वंस नहीं लाना द्वारा, द पेशेंट हैज़ ब्रीद his last yesterday या दिस इवनिंग। टू भी नहीं लगता और जिहड़ा वंस अंदर आया उसनूं असीं चेंज कर देना हुंदा है। एक इहदा इडियम होर है टू पास अवे। इहदा भी बिल्कुल उही मीनिंग आ। अलास the leader has passed away, our favorite leader, our popular leader has passed away। या उदां ही कह दिए कि my grandfather passed away at the age of 90। इहदा एक होर कल्ला ही कह दिंदे आ to be no more means to be dead। alas he is no more। एक होर हुंदा गा बड़ा sophisticated जा, to leave for one's heavenly abode। heavenly abode means heavenly residence, भाव कि स्वर्गी जो बंदे की रिहाइश है उहदे लई चले जाना, धरती छड्ड जाना। जिवें पंजाबी हिंदी च असीं कह दिंदे आ स्वर्गवास होना। ये भी कह सकते हैं कि माई ग्रैंडफादर लेफ्ट फॉर हिज heavenly abode, ABODE, last year, last year। Next, to break the ice। इत्थे दा मीनिंग बर्फ तोड़ना नहीं। टू ब्रेक द आइस हुंदा टू ब्रेक द साइलेंस, चुप तोड़ना है ना। सारे चुप बैठे होन, समबॉडी कम्स एंड स्पीक्स,
तो ही ब्रेक्स द साइलेंस। इदा का भाव होंगे टू ब्रेक द साइलेंस का। तो आप ये कहिए कि इट वॉज आई हू ब्रोक द साइलेंस इन द मीटिंग। तो मीटिंग जाके मैं चुप तोड़ी, ਜਾਂ कि सम फ्रेंड्स वर सिटिंग जस्ट क्वाइटली। तो आई वेंट देयर एंड ब्रोक द आइस, यानी ब्रोक द साइलेंस। नेक्स्ट, टू बर्न द मिडनाइट आयल मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड या टू वर्क लेट इन द नाइट। तो जानी अद्धी रात तक दीवे का तेल लगाते रहना, लैंप का तेल, भाव कि मेहनत करना, रात को देर तक जागना। ही बर्नट मिडनाइट आयल एंड केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स या गॉट ए ग्रैंड सक्सेस। नेक्स्ट, टू बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, जमदे दे मूँह विच ही चांदी का चमचा होना, भाव कि टू बी बॉर्न इन ए वेरी रिच फैमिली, बड़े अमीर खानदान विच, वैल्दी फैमिली दे विच पैदा होना। जिवें असीं आम कह दिंदे आ कि जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज फैमिली, जां आपां किसी होर बारे भी कह सकते हैं कि माई फ्रेंड वाज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। टू बी बिसाइड वन सैल्फ, आपे तो बाहर होना, टू बी आउट ऑफ वन सैल्फ। ये दो तीन ढंग नाल आपां कह सकते हैं कि ही वॉज बिसाइड हिमसैल्फ विद जॉय टू हीयर द हैप्पी न्यूज़, खुशी नाल आपे तो बाहर सी। जां फिर ही वॉज बिसाइड हिमसैल्फ विद सौरो टू हीयर द सैड न्यूज़। ये भी कह सकते हैं कि ही वॉज बिसाइड हिमसैल्फ with rage, R-A-G-E, rage means anger, when he heard the insult of his friend, yeah, when he heard about the insult of his friend. Next, to be out of pocket means खाली जेब होना। तो I am out of pocket these days, यानी to have no money, to be out of pocket का मीनिंग है to have no money. So please learn all these idioms and phrases. Thank you very much. Best wishes. Stay happy, stay blessed.